Good morning, my dear students. Welcome to Conceptum classes. Hi, I'm Javed. In this session, we will discuss 12th class mathematics, its vector algebra. We will discuss multiplication of a vector by a scalar, components of a vector joining 2 points, and section formula. So let us start with multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector by a scalar. So you consider a vector. Consider a vector A. Consider a vector A. Let me have a vector A here. Consider a vector A. Now, let this vector A be multiplied by a non-zero scalar lambda. So let me multiply this vector A by a non-zero scalar lambda. That means lambda multiplied by, or vector A multiplied by lambda, it can be written as lambda into magnitude of vector A. So that means when we multiply a vector by a scalar, we get a new vector. So what we get? A new vector. So when we multiply a vector by a scalar, we get a new vector. We always get a new vector. And the direction of this new vector, the new vector which we get, the direction of this new vector depends upon the value of lambda. And direction of new vector depends upon value of lambda. Meaning to say that, let me take lambda equal to 2. Let me take lambda equal to 2. So that means when I multiply vector A by 2, so 2 multiply vector A multiplied by 2, I get twice vector A. So this is the vector A. ये मेरे पास एक वेक्टर A है. अब जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो ट्वाइस होगा. Direction will remain the same. So this is twice, 2 times vector A. So that means here when we multiply a vector by a scalar, the magnitude of the vector gets multiplied. अब यहाँ vector A था, जब मैंने इसको 2 से multiply किया, I get twice vector A. तो यहाँ जो 2 है ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी. So that means when lambda is positive, direction of the new vector remains same. Direction of the new vector remains same. यानी अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है तो जो हमें नया वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन और ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी. लेकिन अब अगर लैम्डा नेगेटिव है, नाउ लेट मी टेक लैम्डा इक्वल टू -2, व्हाट विल हैपन? अब अगर मैंने लैम्डा को -2 लिखा तो -2 मल्टीप्लाई वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय -2, इट विल बी -2 वेक्टर A. तो इस सिचुएशन में जब लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव होगा
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन, तो ये वेक्टर ऐसे होगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। दिस इज -2. That means magnitude will get multiplied, but the direction will be opposite. So therefore, when lambda is negative, then the direction of the vector is opposite. You first pause the video and note it down. Now, when lambda is negative, direction of new vector is opposite to the direction of original vector. तो डायरेक्शन जो न्यू वेक्टर की होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉजिटिव होगा तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी, और अगर लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव है तो जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन जब हम वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। Therefore, when we multiply a vector by a scalar, magnitude of the vector gets multiplied and the direction depends upon the value of lambda, and the direction depends upon value of lambda। यानी जब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई a vector by a scalar. Next, let us move to an important topic, components of a vector. It's important topic, components of a vector. Now, components of a vector. Now, before discussing components of a vector, let me tell you, unit vector along x-axis is denoted by I cap. We have three-dimensional coordinate. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. This is the origin. A unit vector along o-axis is denoted by I cap. A unit vector along y-axis is denoted by j cap. And a unit vector along OZ or z-axis is denoted by k cap. A unit vector along x-axis is denoted by I cap. A unit vector along y-axis is denoted by j cap. It is denoted by j cap. A unit vector along z-axis is denoted by k cap. Now, components of a vector.
This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Now you consider a point P, x1, y1, and z1 in a space. Consider a point P, x1, y1, z1 in space. That means in the three-dimensional coordinate system. Now, components of vector, that means if we find the position vector of OP, if we find the position vector of point P with respect to OX, OY, and OZ, what will be the coordinates of that position vector? That we have to find out. Now, let me take a point A at length x, from the origin, a point B at length y from the origin, and a point C at length z from the origin. Let OA let A be a point on OX, let A be a point on OX at length x, So therefore, this OA, this vector OA, it will be equal to xi cap. It will be equal to xi cap because the unit vector along OX is I cap. That means the length of this OA, it will be xi cap. Similarly, length of OB will be equal to yj cap, and length of OC will be equal to zk cap. Similar, vector OB, similarly this vector OB, it will be equal to yj cap, and vector OC will be equal to zk cap. Now let me find the position vector of point P with respect to OX, OY, and OZ. That means join this point P with the origin. Join point P with the origin. Join P with the origin. Let me say position vector of OP. Let me say the position vector of OB be equal to vector R. Let me say position vector of OP is equal to vector R. Now we have to find the coordinates of R, the value of vector R. That will be the components of a vector. Now from A, you draw a line parallel to OY. Let me name this point as C dash. Then join B, C dash. So that means this OAC dash B is a parallelogram. This is A dash.
Now you complete the parallelograms. Complete the parallelograms OAC dash B and OA B dash C, and all these parallelograms you complete. Now you first pause the video and note this down. Let me rub this. Now this OAC dash B is a parallelogram. OAC dash B is a parallelogram. Therefore, this OA, it will be equal to BC dash. This OA will be equal to BC dash. Now OA, it is xi cap. That means OA is equal to BC dash is equal to xi cap. Similarly, this AC dash will be equal to OB. Similarly, AC dash will be equal to OB, and OB, it is YJ cap. That means this AC dash will be also equal to YJ cap. Similarly, C dash P is equal to OC is equal to ZK cap is equal to ZK. This CP और ये OC बराबर है क्योंकि ये OC dash AC is a parallelogram. क्योंकि अब आप कहोगे ये OC कहाँ परपेंडिकुलर है इस पर PC पर, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ दिस इज द इमेजिनेशन. ये 3 डायमेंशनल है, यहाँ डायग्राम परफेक्ट नहीं बनती है, therefore you have to imagine things. इमेजिन करिए ये OC डैश परपेंडिकुलर है इस पर CP डैश पर, therefore this CP dash will be equal to OC, that will be equal to ZK cap. Now take the position vector of point P, that is OP. It is equal. Let me use triangle law of vectors to triangle OC dash P. इस ट्राइंगल OC dash P में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स लीजिए, तो OC dash plus C dash P is equal to OP. That means OP dash is equal to OC dash plus C dash P. Now OC dash, you keep this as first. Take this OC dash. Now you apply triangle law of vectors to this triangle OAC. To triangle OAC. That means OC dash will be equal to OA dash plus AC dash. This OC dash, here OC dash, it will be equal to OA dash, OC dash is equal to OA plus AC dash. Keep this as second. Substituting second in first. Substitute करिए second को first में. That means vector OP, that is position vector of point P, it will be equal to OC dash, that will OA plus AC dash plus C dash P. Now we have kept position vector of point P as vector R. That means vector R. OA, that is XI cap plus AC, that is YJ cap plus C dash P is ZK cap. Therefore, components of the position vector, of point P, that is vector R, is equal to XI cap plus YJ cap plus ZK cap. And magnitude and
magnitude of R, it will be equal to under root of x square plus y square plus z square. This is the components of a vector. Pause the video and note it down. Let me move to next topic. Vector joining 2 points. Now, vector joining 2 points. Consider 2 points. P, x1, y1 and z1, and Q, x2, y2 and z2 in a space. Consider 2 points P, x1, y1, z1 and Q, x2, y2, z2 in a space. Now vector joining 2 points. We have to find the vector which joins points P and Q. Let the vector joining P and Q be vector PQ. Now vector joining points P and Q is vector PQ. We have to find the magnitude of vector PQ. वेक्टर PQ किसके बराबर होगा? तो वेक्टर PQ निकालने के लिए हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे P और Q का. Let us find the position vector of P and Q. तो पोजीशन वेक्टर P का निकालने के लिए इस P को O से ज्वाइन करिए, ओरिजिन से ज्वाइन कीजिए. Let me say the position vector of OP is vector A. और फिर Q को ज्वाइन कीजिए इसके साथ, OQ के साथ. So that means let me say the position vector of point Q is vector B. Now join P to O. Therefore, position vector OP is equal to vector A, and join Q to O. Let me say that position vector of point Q, that is OQ, be equal to vector B. Now this vector A, that is the position vector of point P, it will be equal to किसके बराबर होगा? x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and position vector of point Q, that is vector B, will be equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Now vector PQ. To find the vector PQ, let me apply triangle law to triangle OPQ. Now applying triangle law of vectors to triangle OPQ. It means OP, vector OP plus PQ is equal to OQ. OP plus PQ, OQ के बराबर होगा, तो मुझे PQ चाहिए. तो
PQ is equal to vector PQ is equal to OQ minus OP. What is OQ? It's a position vector of point Q. And what is OP? It's the position vector of point P. So that means PQ is equal to position vector of OQ. I have kept it as B. It's vector B minus OP is vector A. So that means PQ, vector PQ. Vector B is xi cap plus x2i cap plus y2j cap plus z2k cap. It's x2i cap plus y2j cap plus z2k cap minus vector A, x1i cap plus y1j cap plus z1k cap. Here vector PQ is equal to. Now you subtract the corresponding elements. X2 I cap minus x1 I cap. It can be written as x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. This is the vector joining 2 points. And if you want to find the magnitude of vector PQ, then magnitude of vector PQ will be equal. First you pause the video and note it down. Now magnitude of vector PQ, when we put a vector under modulus, it becomes the magnitude. It is known as magnitude of vector PQ. It will be equal to under root of x2 minus x1 whole square. क्योंकि I cap का square 1 होता है, because I cap it's a unit vector. तो I cap का square 1 होगा, 1 into 1 1 ही होगा, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत क्या है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This is the magnitude of vector PQ. Next is now section formula. Now section formula. बच्चों 10th क्लास में आपने पढ़ा है, अगर आपको 10th क्लास का कुछ याद होगा, अगर हमारे पास एक पॉइंट होता है यहाँ A और यहाँ होता है पॉइंट B, चलो मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, चलो x1 y1 ही मैं मानता हूँ 2 डायमेंशन, क्योंकि हमने 10th क्लास में सिर्फ 2 डायमेंशन किया था, इसका मैंने x2. Let a point M or point P divides AB in the ratio of M is to N. तो याद होगा सेक्शन फार्मूला में हम क्या बोलते थे, that means the coordinates of point P be x y z be x and y, then हम कहते थे कि x is equal to mx2 plus nx1 over m plus n, and y is equal to my2 plus ny1 over m plus n. ये इंटरनली जब डिवाइड होता था, और अगर एक्सटर्नली जब होता था, अगर आपको याद होगा तो हम कहते थे x is equal to mx2 minus nx1 divided by m minus n, and y is equal to my2 minus ny1 divided by m minus n. This ये आपने 10th क्लास में किया है. आज हम यही सेक्शन फार्मूला करेंगे, लेकिन वेक्टर में. फर्क तो यही है, 3 डायमेंशन में, यहाँ तो 2 डायमेंशन का था, यहाँ हम 3 डायमेंशन में करेंगे, बाकी तो सेम है. So let
x एक्सिस, y एक्सिस, दिस भी z एक्सिस। चलो मान लिया मेरे पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। चलो मान लिया ये वेक्टर PQ है। Let a point R divides PQ in the ratio of m:n. So let P and Q be the 2 points in space. Let R be a point dividing PQ in the ratio of m:n. चलो मान लिया। चलो मैं इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालता हूं, इसको मैं ऑरिजिन के साथ ज्वाइन करूंगा। चलो मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है। इसी तरह मैं Q का भी पोजीशन वेक्टर निकालता हूं। चलो मान लिया इस Q का पोजीशन वेक्टर मेरे पास वेक्टर B है और मैं R का भी पोजीशन वेक्टर निकालता हूं। चलो मान लिया R का जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरे पास R है। तो हमने निकालना है R पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R किसके बराबर होगा। We will use section formula here. सीधा हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ऐसे करो आप, पहले आप आर की पोजीशन निकाल दो। नाउ अगर मैं इस ट्राइंगल ओ पी आर में एक ट्राइंगल लॉ यूज करूंगा, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल ओ पी आर, क्या होगा, ओ पी प्लस पी आर is equal to OR. OP, that's vector A plus PR। ऐसे करते हैं, PR को मैं निकालता हूं, तो OR is equal to OP plus PR, OP plus PR। तो PR किसके बराबर होगा, OR माइनस OP। तो PR होगा OR माइनस OP और PR इज इक्वल टू OR, OR मेरे पास R है, माइनस OP दैट वो मेरे पास वेक्टर A है। उसको मानता हूं फर्स्ट। नाउ इसी तरह मैं यहां निकालता हूं, RQ is equal to B minus R, vector B minus vector R। Now M into B is equal to N into vector A, or M into B minus R is equal to N into R minus A। So MB minus MR is equal to NR minus NA।
यहाँ इसको ले आओ, यहाँ इसको ले आओ, हो गया एम बी प्लस एन ए इज इक्वल टू एन आर, एम आर इसको ट्रांसपोज कर दो प्लस एन आर, एम बी प्लस एन ए, यहाँ एम निकाल आर निकालिए कॉमन, इट इज एम प्लस एन, that means vector r will be equal to mb plus na divided by m plus n. This is when r divides pq internally, and if it divides externally, then this r will be equal to mb minus na divided by m minus n. This is our section formula. So this इस सेशन में हमने multiplication of vector by scalar components of a vector, vector joining 2 points, and section formula discuss किया. In the next session, we will discuss exercise 10.2 of vector algebra. Till then, goodbye. Have a nice day.